Good morning, everyone. Today we are going to start our chapter 5, that is etiquettes. आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड एटिकेट. दिस इज नॉट द न्यू टर्म फॉर यू, राइट? एटिकेट्स हम बोलते हैं कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है तो हम बोलते हैं इसमें तो एटिकेट ही नहीं है बात करने का, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिकेट्स? तो एटिकेट्स आर द सेट ऑफ रूल्स और कस्टम्स दैट कंट्रोल एक्सेप्टेड बिहेवियर इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स और सोशल सिचुएशंस. अब व्हाट इज द नीड फॉर एटिकेट? हमें क्यों जरूरत है एटिकेट्स रखने की? कि हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, क्या जरूरत होती है इसकी? तो फर्स्ट वन, एटिकेट टीचेस यू द वे टू टॉक, वॉक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिहेव इन द सोसाइटी. Etiquette is essential for an everlasting first impression. The way you interact with your superiors, parents, fellow workers, friends speak a lot about your personality and upbringing. Etiquette enables the individual to earn respect and appreciation in the society. No one would feel like talking to a person who does not know how to speak or behave in the society. Etiquette inculcates a feeling of trust and loyalty in the individuals. One becomes more responsible and mature. Etiquette helps individuals to value relationships. जिसके अंदर बात करने का तरीका नहीं आता है, जिससे बोलने का तरीका नहीं आता है, उससे हम भी बात, दूसरे लोग भी उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं. हम कहते हैं ना कि उसमें तो एटिकेट ही नहीं, उससे क्या बात करें. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेलीफोन एटिकेट. जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं या अगर हमने कॉल किया है या कॉल रिसीव किया है तो उस समय भी हमें कुछ रिक्वायर्ड होती है एटिकेट्स की. Okay, so telephone etiquette implies the manners of using telephone communication, including the way you represent your business, yourself, greeting the receiver, the tone of voice, the choice of word, listening skill, the closer to the call, etc. बहुत सारी चीजें होती है टेलीफोन एटिकेट के अंदर. आप कैसे रिसीव कर रहे हो, आपका टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है. हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि आपको सामने को देखने वाले कोई बॉडी लैंग्वेज, आप जब सामने आमने सामने हो तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए. While talking on the telephone also body language, proper body language is required. Okay, your tone of voice, इससे पता चल जाता है अगले को कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो बात करने में. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेलीफोन एटिकेट्स की? फर्स्ट, प्रोफेशनलिज्म. कम्युनिकेटिंग विद टेलीफोन मैनर्स ऑलवेज शो योर प्रोफेशनलिज्म. इट मेक्स द कस्टमर बिलीव दैट देयर वर्क इज इन गुड एंड सेफ हैंड्स. मोस्ट लाइकली दे वुड रिपीट द डील. Impression. The impression that you create on telephone communication has a lasting effect. The telephone etiquette you follow makes the receiver feel respected. आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं लास्ट इंप्रेशन होता है. ओके, अगर आपने फोन पे, अगर आपका सपोज कस्टमर से बात करो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कस्टमर का फोन आया है, तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा ऑन टेलीफोन ऑल्सो, इट शुड बी, इट मतलब उसका इंप्रेशन मतलब पड़ सकता है. फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो कस्टमर पे इफेक्ट डाल सकता है कि आगे से इससे डील करनी है या नहीं करनी है. Loyalty and trust. The telephone etiquette builds the trust of your potential customers on you. It makes them loyal to you and purchases the products and services from you frequently. Customer satisfaction. When the customer gets satisfied with the telephone conversation, they are sure that their needs and requirements will get satisfied in person also. It gives them a consistent and well-rounded experience. क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टेलीफोन एटिकेट्स? तो फ्रेंडली ग्रीटिंग्स. The way you greet your caller must be warm and pleasant. The call should get a feel that you are alert and attentive to his call. The cheerful and positive greeting will get back the same enthusiasm. Start with the proper salutation. Thank you for calling. A brief introduction of yourself and the business, and then inquire about the reason for calling. आपकी स्टार्टिंग आप हमेशा मतलब गुड ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करो उससे. ओके, प्रॉपर विद प्रॉपर सैल्यूटेशन से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज, जैसा मैंने अभी बोला कि बॉडी लैंग्वेज टेलीफोन कन्वर्सेशन में भी मैटर रखता है. ओके, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी वॉइस में एक चीज, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट जो है आपके टेलीफोन, आपकी वॉइस से झलक जाता है. ठीक है. While you talk on the phone, a cheerful voice and the bright tone gives the feeling to the receiver that you are relaxed and at ease. Okay. The tone of voice, the attitude on the phone gives customers opinion about your business. Also, the attitude is conveyed through the tone you adopt to talk. The tone of your voice should be confident as well as respectful towards the caller. A pleasant pitch of voice gives a sweet note to the ears. Tact. Sometimes it becomes inadvertent to inform unpleasant, upsetting, and sensitive information on the phone. At such times, it becomes imperative to handle the situation tactfully. The choice of words should be soft yet distant and should not at all offend the caller. कई बार हमें ध्यान रखना पड़ता है, ढंग होता है, कई बार हमें ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है कि हमारा हो सकता है टोन जो चेंज हो भी सके, बट द सिचुएशन शुड बी हैंडल्ड टैक्टफुली.
Active listening, an important point that office phone etiquette considered is active listening. You should provide undivided attention to your caller with the least possible disturbances. It gives the impression that you care about the customer and his needs. Then appropriate closing. While bidding goodbye, always thank your customer. Ensure that all that he wants to convey is completed. This ensures the customer that your business is a customer-driven one. Also try that the customer hangs up the call. Just ensure that there are no accidental hangs up. आप मतलब कंफर्म, जैसा हमने कहा बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए वैसे एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, कस्टमर पहले रखे आपका फोन, ऐसा है ना. देन बिजनेस फोन एटिकेट ट्रिप्स. Try answering the calls in the first 2 or 3 rings. This gives the feeling of being valued. The call should start with giving identification of yourself and your business to avoid any confusion. A positive tone of voice always has a better response back and help to build a good rapport. A friendly and cheerful body language is always preferred. Always have minimum possible interruptions and distraction when you are on a phone call. Active listening and taking notes in parallel is beneficial for giving periodic affirmation of understanding the customer. Any customer always prefers a polite and sympathetic, honest message. Before placing the call on hold for any reason, seek permission from the caller. Ensure all the requirements and queries of the caller are solved before you appropriately close the call. सो ये है हमारे फोन एटिकेट्स कि आप रिसीव अच्छे से करो एंड अच्छे से करो. आपका टोन ऑफ वॉइस अच्छा होना चाहिए. कस्टमर को लगना चाहिए कि यस मैं जैसे डील कर रहा हूँ वो मतलब सही आदमी से मेरा काम पड़ रहा है. ओके, अब कुछ एटिकेट्स होते हैं फॉर फॉरेन बिजनेस ट्रिप्स के भी. जब आप बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हो फॉरेन, तब क्या चीजों का आपको क्या एटिकेट्स आपको रखने हैं. तो फर्स्ट, पंक्चुअलिटी. ऑलवेज बी पंक्चुअल. इट इज रेस्पेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ओके, प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर ट्रैवल एंड मीटिंग शुड बी डन. आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ट्रैवल टिकट होने चाहिए, ट्रैवल शेड्यूल, लिस्टिंग ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी फॉर मीटिंग. मतलब मीटिंग में आपको किन किन चीजों की रिक्वायर्ड है सबकी आपकी लिस्ट होनी चाहिए. आपके पास सब चीजें आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए. ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. बिजनेस एटिकेट डील विद बिल्डिंग relationship with others. Always show courtesy to people wherever they are. Be organized and clean up after yourself. Wherever you are traveling, example, plane, car, train, office, boardroom, always clean up the place before you leave. It is advisable if you can learn few commonly used words from the native language of that region. Greetings, example, hello, thank you, have a good day, etc. जहाँ जा रहे हो वहाँ के थोड़ी बहुत commonly used जो word है उनको सीख लो और क्या. Learn about few landmarks or key places of your travel destination. Never criticize the food and the country. Never say anything bad about your host. Always dressed up properly as per the business protocol. Always keep the conversation light on social topics and current events. Always plan to stay connected. कैसे कनेक्ट, अगर आपकी ट्रिप लॉन्गर ड्यूरेशन की है तो लोकल फोन खरीद लो वहां पर फॉर मेकिंग द कॉल विद इन होस्ट कंट्री. ऑलवेज कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एम्बेसी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट विद यू वेर एवर यू गो. से फॉर अ डिनर और अ मीटिंग, कहीं पे भी जाओ अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है सब अपने पास होने चाहिए. In case of any accident or natural calamity, you may not get chance of going back to hotel rooms to collect your credential. Example, during earthquake in Japan, traveler could not go back to hotel rooms to collect their traveling documents. Okay, आपको लगे कि होटल तो हमारे पास ही अभी आ जाएंगे 2 मिनट में. No, always carry your documents with you. Always send a thank you or appreciation letter to your host after returning. विजिट्स ऑफ फॉरेन काउंटर पार्ट्स. अब आपके यहाँ कोई आता है फॉरेन डेलीगेट जो है उनको किस तरीके से उनके सामने किन चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, keep their travel details with you. Make suitable arrangement for their pickup from airport and comfortable stay. Always greet the guest with a smile. Try to avoid sending the driver alone for their pickup from airport. If possible, send one person from office along with driver. Make necessary arrangement for their daily commute during their stay. Make arrangement for their local communication, for example local SIM card with mobile phone. उनके लिए जो communication, जो local communication easily कर सके वो मतलब हर तरह की facility उन्हें provide करो आप. Make sure to suggest them famous places, famous item, famous food of your place. Make arrangement for their visit at these places after meeting is over or on weekends. Try to make their stay comfortable and make them feel at home. Now etiquettes for small talk. स्मॉल टॉक हम क्या कहते हैं. स्मॉल टॉक जो है इट इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट अ कॉमन टॉपिक. इट मे अकर अमंग द फ्रेंड्स, co-workers or strangers. It allows people to become comfortable and friendly at work without going too personal. It is considered as a social skill. अब यूजुअल टॉपिक जो होता है जिसमें जब सब नॉर्मली बात करते हैं कि हम मौसम कैसा है आज, है ना, कौन सी मूवी देखी, कौन सा नया गाना है, कौन सा मतलब क्या खाना खाया, मतलब ये स्मॉल टॉक के यूजुअल टॉपिक्स है हमारे.
अब इनके लिए क्या हमें चीजों का ध्यान रखना है? Tips. Okay. So first, keep a positive body language with a smile. This will reflect a willingness to communicate. Start the conversation with greetings and then introduce yourself. Always ask open-ended questions. This will give offers fair chance to participate. Always listen with full attention to other person's talk. Always discuss general things, example current affairs, weather, music. मतलब इन चीजों का नॉलेज होगा तभी तो आप बात कर पाओगे. जनरल थिंग्स जो है उसको डिस्कस करो ताकि लोग भी, सामने वाला भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए. Always keep yourself updated with what is happening around the world. Try to avoid controversial topic जैसे religion पे, politics पे, personal problem. इनसे controversial topic नहीं करना है, हमें general topic जो है उस पे करना है, light topics पे बात करनी है. Engage a stranger in conversation. This will help you to expand your friends or client circle. Always close the conversation politely. Example, it's been nice talking to you. Casual conversation during small talk open new opportunities to build a cohesive team, thereby increasing the success rate. Now, respecting privacy. Dictionary meaning of privacy is a state in which one is not observed or disturbed by people. Privacy is about respecting individuals. Trust plays a vital role in a personal, professional, governmental, or commercial association. Breaches of confidentiality leads to breach of that trust. अब क्या चीजें हैं respecting privacy of others and organization? किन चीजों का हमें ध्यान रखना है? तो first, employer must respect employees' privacy. Employer must take the consent from employee before any collection, use, or disclosure of his personal information is done. Data privacy is vital. An employee must respect privacy of colleague in workplace. Standing behind a person without telling him and noticing what he is doing is very rude and unethical. Never peep into other computer. Never share any personal information about your colleagues with others without his consent. It is the responsibility of employee to keep confidentiality or organizational data. Every person has right to privacy to enjoy peaceful existence. Organization may monitor its employees' activities for security and productivity, but by no means employees should be made uncomfortable. Follow the golden rule. You should treat other people the way that you want to be treated. जैसा आप ट्रीट करोगे, जैसा आप लोगों को ऐसा ही ट्रीट करो जैसा आप खुद चाहते हो, है ना? Apply the golden rule to internet privacy as well. Never dig deeper into another person's online privacy. Learn to keep secret. If someone shares some personal or sensitive information with you, or you got to know by some other means, don't share it with others. Doing this, you are showing that you can't be trusted. Now, the learning to say no. हम कहते हैं कि हमें जहाँ जॉब करते हैं, चलो हमको काम का मना नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर कई बार हमें ना करने की भी आदत होनी चाहिए. हमें ना करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के लिए बहुत जरूरी हो जाती है चीज, है ना? Being assertive is important life skill, but that one must have. Assertive people communicate clearly and directly say what they want. This helps them to maintain better balance, less stress, and improve quality of life. We must learn to be assertive and say no whenever necessary to avoid stress and ending up in unfinished tasks. Learning to say no is important time management skill. If you want more time, freedom and energy, start saying no. भाई ऐसा नहीं कि आप हर काम का ना करते हो, पर हाँ, जहाँ आपको लग रहा है कि ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो आप, उस केस में आप ना करो. Reasons for not saying no are to say yes is easy, seems like a ready solution. We don't want to hurt feelings of other our friends or relatives, etc. We are afraid of saying no to our boss as this may affect promotion or appraisal. We don't have our own plans, priorities, and goals. We fear rejection or anger or uncertainty of others' response. ये हमारे रीजंस हो सकते हैं नो जो हम नहीं कहते हैं उसके. अब किस तरीके से हमें कहना चाहिए? हाउ टू से नो. To be polite and firm while giving response. Always say I've decided not to do it. Don't say I cannot do it. ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, but मैं नहीं चाहता हूँ. I have decided not to do it. Never lie or give excuses as they lead to guilt feeling. Practice saying no first with your friends or close relatives. This will make you comfortable in real situations. Now, consequences of not able to say no. अगर नहीं कहोगे तो उसके क्या ना को ना करोगे तो क्या फर्क हो सकता है? तो you don't get time and energy for your own goals and priorities. This may lead to anxiety. You may feel someone else is controlling your life. You may miss good opportunities, proposals, skill improvement, deadlines. You may compromise with your moral values in case you say yes to some wrong proposal or person. You may end up overburdened if you don't say no to extra work. Now the last is time management. Time management is the process of effectively managing your time between specific activities. Good time management enables you to work smarter so that you can complete maximum times or activities on less time.
It is a way to organize and plan how much time to be spent on specific activities. टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है? हमें किस तरीके से हर एक्टिविटी का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए, हमें टाइम मैनेज करके चलना चाहिए ताकि हम ओवर स्ट्रेस नहीं आए. तो फर्स्ट, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, more productivity and efficiency, good professional reputation, more opportunities to achieve vital life goals. It makes an individual punctual and disciplined. क्या टेक्निक्स हैं? फर्स्ट, set goals that are smart. Smart मतलब specific, measurable, attainable, relevant, timely. Prioritize the task based on importance and urgency. Set the deadlines for completing tasks. Allot a specific time to each task wisely. This is helpful to plan your schedule. सब काम का एक टाइम फिक्स कर दो, ठीक है, डेडलाइन फिक्स कर दो. Set break time between tasks to refresh yourself. This will help you remain focused and motivated. Organize yourself by writing deadlines to projects and then to subtasks associated with completion of the project. Remove non-essential tasks or activities. Plan your work in advance. Prepare to-do list every day. This list should include tasks that need to be done that day. It is always advisable to prepare a to-do list for next day at the end of each work day. क्या skills required है for managing the time? First, stay focused. Learn to prioritize. Be punctual and disciplined. Be focused and reasonable. Thank you.